हाय, आपको अगर कोलकाता की एक आइकॉनिक फूड के बारे में पूछूं जो स्ट्रीट फूड है, आपका जवाब क्या होगा? पुचका, जो दिल्ली में गोलगप्पा बोलते हैं, मुंबई में पानी पूरी बोलते हैं, बट Calcutta Puchka is the best. Hi, I'm Chef Ananya Banerjee, and today I'm going to teach you Kolkata Style Puchka. Let me talk about the fuchka filling now. fuchka filling जो है, आपने नोटिस किया, इसमें बॉइल्ड पोटैटो और बॉइल्ड बनाना या मटर से बनता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली का गोलगप्पा और मुंबई का पानी पूरी, द फिलिंग इज लिटिल डिफरेंट. मुंबई का ब्लैक चना या काले चने से बनता है एंड दिल्ली का गोलगप्पा चिकपीस या छोले से बनता है. दैट्स द बेसिक डिफरेंस. So let's now talk about the fuchka water. What goes in the fuchka water? Basically tamarind. We call it tetul. Tetul jol is the fuchka water. Rest of India, like Golgappa and Pani Puri, they have pudina, meetha chutney, but we don't add all of that in fuchka water. It's tamarind and a little bit of sugar you can add to balance out the flavor. And the hero of this water is Bhaja Moshla. What is Bhaja Moshla? It's roasted jeera and mirchi, red chilli, dried red chilli. So you bruno red chilli and jeera in a pan and pound it. Make a mixture. That Bhaja Moshla is used in a number of Bengali dishes. कलकत्ता का और एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे पास आज नहीं है. If you can source that, please use it. वो है गोंदराज lemon और गोंदराज lemon. The aroma of that lemon is something else. तो वो अगर ये फुचका वाटर में जाए ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है. This is बचपन की यादें, but I don't have it today, so I'm not using it. If you don't have it, you can follow this recipe, but if you can source it, use it. मजा आ जाएगा. You know what? कलकत्ता का बहुत याद आ रहा है और एक खा लेते हैं. I know this is greed, but I have to do this. How can you have one fuchka? Not possible. सच्ची में, I'm in Kolkata now. If you like this video, do try this at home. अगर नहीं खानी है कलकत्ता फुचका, मत बनाओ, आपका लॉस.